Okay, let's start. Last time we were doing something which was about essentially looking at why rotation takes place. Essentially, I was only focusing on things that are just rotating and not translating, and so-called what I would say pure rotation problems. You're just looking at the rotation of different objects. You're not really interested in how they move from here to there. And we started off by these definitions for a point particle. For a point particle, it is true that if you define a vector which is r cross f, f being the net force on that particle, and then you define another vector which is the angular momentum, r cross p, then if you apply this to a collection of point particles in the context of an object rotating about some axis, so for example you have this object that is rotating about this axis that is passing through point O. If you apply these definitions for a point particle to an object that is rotating about this axis, you chop up this object, of course, into little pieces, apply those to each little piece, and you find that the total external torque acting on this object must be equal to the moment of inertia of this object about this axis times the angular acceleration, where I have taken by convention the z axis to be pointing out of the board. Okay, and we did one. So notice on the left hand side you have the net external torque, which is good because the external torque is something that you can calculate. The internal torques are not something that you can easily calculate because you don't know the internal forces. I is the moment of inertia and alpha is the angular acceleration about the axis of rotation. Shh. Okay. Watch closely because this is one of those chapters in which the mathematics itself is relatively straightforward, but the physics part is more troublesome, and whenever the physics part is more troublesome, then of course there are more words that I have to speak out loud to explain what I am doing and why I am doing it. Okay. You cannot fall back on equations so much because there are fewer equations to begin with. I gave you one very simple example that if you have a ring which is essentially there are some light spokes for this ring, and the ring can just rotate about this point. So you have nailed the ring to the wall, for example, over here. So the ring can just rotate about this axis, whether clockwise or anti-clockwise, that depends on how the force is applied. So if you wrap some thread around this ring and pull this ring with some force F, okay, the total torque acting on this ring about this axis, if the radius of the ring is capital R, I'm sorry over here by the way, many people do use capital R for the radius, of course. It's dangerous to use small r because of course there's the position vector coming along as well very often, and r you are using for the position vector as well. So you use a small r without the arrow, then you have the possible confusion with the magnitude of that r vector. Unfortunately, very soon we also have to deal with the center of mass. So it turns out that if something is both translating and rotating, the easiest way to analyze that motion is to analyze it as, well, that there's angular momentum due to the motion of the center of mass, and then there's angular momentum because of the motion around the center of mass. So very soon capital R vector will also be appearing. So then there's a possible chance of confusion with this radius. So it's a good practice you use some other radius symbol for the radius. In other words, typically people use small b. Okay, तो अगर आप देखो radius, if you want to be very safe, radius को typically आप small b से denote कर सकते हो so that you don't confuse it with the other r's that are floating around in this problem. Okay, anyway, so in this lecture, if you see b somewhere, that's going to be some radius. Okay, anyway, in this case, since we haven't talked about the center of mass yet, let's just stick with capital R. What's the torque about this axis? How do you find that out? Again, you draw a vector that joins the point about which you are calculating the torque. And why are we calculating the torque about this point?
क्योंकि इस गिर्द के नहीं, बिकॉज इस गिर्द के गिर्द रोटेट कर रहे हैं. अगर किसी और पॉइंट के गिर्द अगर आपने नेल किया होता उस पॉइंट के गिर्द रोटेट कर, देन यू वुड हैव कैलकुलेटेड टॉर्क अबाउट दैट पॉइंट. दिस इज अ प्योर रोटेशन प्रॉब्लम. You don't need to worry about the center of mass. You just need to worry about the point about which the object is just rotating. Okay. So in this case, this point happens to be the center of mass, but it need not be the case. Okay. In this case, so you draw a vector like that joins the point about which you are calculating torque to the line of action of the force. Any choice of r will do. You can choose this r as well, but then of course that is needlessly more complicated because then you have to take into account this angle. What will go into the cross product, of course, is the magnitude of this vector times the sine of this angle, which again gives you this much length. So you might as well choose this vector r such that is perpendicular to the line of action of the force. Okay, so in that case, then you just get that r cross f का direction क्या होगा? Is it into or out? So you do first of all r को उधर slide करो और फिर आपका आ जाएगा ये r है. ये आपका f नीचे की तरफ है, so you have the thumb pointing into. Okay, so this is basically equal to capital R times f minus Ez. हाँ. कोई और भी ले सकते थे. You would have gotten the same result. क्योंकि वो कोई और लेते, अगर आप ये ले लेते R, तो फिर आपका आ जाता कि भाई इसकी लेंथ टाइम्स द साइन ऑफ द एंगल ऑफ साइन ऑफ दिस एंगल टाइम्स एफ, बट इसकी लेंथ टाइम्स साइन ऑफ दिस एंगल इक्वल्स दिस लेंथ, द रेडियस. सो यू वुड हैव गॉटन एग्जैक्टली द सेम रिजल्ट. Okay, and this equals I times alpha Ez. The sign is just telling you that angular acceleration will be into the board, which just implies in this context that the thing is going to rotate clockwise. Okay, so essentially because क्यों clockwise? क्योंकि as time goes on theta is decreasing then. Remember हमने किस तरह एंगल को डिफाइन किया था? ये आपका थीटा है. अगर थीटा इंक्रीज कर रहा है तो कैसे इंक्रीज करेगा? एंटी क्लॉकवाइज. So anti-clockwise rotations correspond to positive signs, clockwise rotations correspond to negative signs. Okay, so alpha being negative means कि ये angular acceleration इसकी clockwise है essentially. So this force will tend to rotate this thing clockwise. Of course it does. I mean ये physically obvious है that this thing will rotate clockwise. Okay. And therefore alpha, I'm not just worried about the magnitude of the angular acceleration, which is f times r divided by I. And for this ring, since the masses of the spokes are assumed to be negligible, for this ring, the moment of inertia, if you recall, the moment of inertia is basically a sum. So the moment of inertia, if you remember, is a sum. As in, for the object, you chop up the object into small pieces. The mass of each piece multiplied by the distance squared of the piece from the axis of rotation. When I say distance squared, I mean the perpendicular distance squared from the axis of rotation. क्या चीज? नेगेटिव जो शो कर रहा है कि ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा. किधर? मैं कहा था कि now I'm just worried about the magnitude. So never mind the minus sign. Minus sign तो बता रहे clockwise है, मुझे पता चल गया. Now I'm just worried about कितनी तेजी से clockwise. Okay, so that's why I just threw away the negative sign. Okay, right. So the moment of inertia in this case will be, because each piece of the ring is the same distance away from the axis of rotation, which is capital R. This Ri square is just capital R square for each and every piece in our case, and therefore this R square you can take outside. What is left is of course the total mass of the ring, which is just equal to, gives you mr². You plug this in and you find that alpha in this case is just fr over mr², which gives you f over mr. The smaller the radius of the ring, the faster the angular acceleration, the more quickly it will start to rotate. Okay, and so you saw right away that knowing the moment of inertia is absolutely crucial. The bigger the moment of inertia, the smaller the angular acceleration. Just like for translation motion, the bigger the mass, the smaller the linear acceleration. So moment of inertia physically tells you something about the rotation inertia. The bigger the value of the moment of inertia, the smaller the
changes in the rotational motion. Okay. Let's do another example for regarding the moment of inertia, a couple of more. So first, last time remember we did the ring example, we did the disk example. Ki thi na? Okay, so if you the disk example, if I quickly recap it, you can chop up, you already know the moment of inertia for a ring. You can consider a stack of these rings, concentric rings, to build a disk. So एक ring को देख लेते हैं. You have this stack of these rings which are stacked together make this disk. This particular ring that I am considering has radius r. For example, the thickness of this ring is dr. The contribution to the moment of inertia due to this ring alone, which is a small contribution to the total moment of inertia, that's why I've written dIe, equals the moment of inertia of this ring, right, which is the mass of this ring, which is small dm, times the radius square of a ring. क्योंकि एक ring का moment of inertia क्या है? Mass of the ring times the radius squared of the ring. So I just write dm r². And dm, the mass of this ring, assuming a uniform ring है, the mass of this uniform disk है, the mass of this ring will just be equal to the total mass of the disk divided by the area of the disk times the area of this ring, which is 2 pi r dr. And this you can simplify, pi cut गया, आपका आ गया जी 2m over r² times r dr, right? And you plug this in over here and you get that this is 2m over r² and you get r³ dr. And the total moment of inertia, you just add it up over all the rings. So the total moment of inertia will just be the integral of 2m over r² r³ dr from the innermost ring. ये वही 12 अंडे का 200 रुपए के हैं, 5 अंडे कितने के हैं? अंडे खरीदने चले जाओ. I don't know, you like eggs, okay, there's good source of protein, okay, but anyway, okay. Total mass is disk का m है, total area is disk का pi r² है. क्योंकि आपको ये शेडेड जो रिंग है आपका, उसका एरिया आपको पता है. तो मैं कह रहा हूं उसके कोरेस्पॉन्डिंग मास कितना होगा, ओके? उसका एरिया, रिंग का जो एरिया है वो ये है. क्या चीज? ये कैसे आया है? इस तरह भी मास है, मास डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय एरिया. कौन सा? 2m over r² times r³ dr. इधर मास ओवर डिस्टेंस स्क्वायर में, इससे ऊपर m over pi r² times 2 pi r dr. Okay, so this gives you 2m over r². आपका इंटीग्रल से बाहर गया. इधर आपने लिमिट्स क्या डालनी होंगे? आपका इनर मोस्ट रिंग का रेडियस क्या है? 0. इनर मोस्ट रिंग है ना, सबसे छोटे वाला रिंग जो इतना यूं करके रिंग जो है, और सबसे बड़े वाले रिंग का रेडियस क्या है? कैपिटल R. There you go. You are adding up over the rings now to build the disk. इंटीग्रेशन बड़ा फिजिकल प्रोसेस होता है, ये लिटरली ब्लॉक्स जैसे आप जोड़ रहे हो. Okay, and so this thing 2m over r² goes outside. r³ का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है? r raised to power 4 divided by 4. Put in the limits, you will get capital R raised to power 4 over 4. ये गायब हो गया, ये आपका कैपिटल r² आ गया, ये कट गया इसके साथ, and you get half mr². Of course, it's again mass times distance squared, क्योंकि moment of inertia के dimensions ही mass times distance squared है. Either for a disk, of course, the only dimension you need to specify is the radius. So you should again have something that looks like mass times radius squared for the disk. The only thing you have to figure out is the constant in front. वो इस केस में half है. And that also makes sense. Ring की निस्बत जो है, for the same mass, ring की निस्बत disk का moment of inertia कम होगा. There is a significant amount of mass for the disk which is quite close to the axis of rotation. Ring के लिए सारा का सारा mass जो है बड़ा दूर दूर है axis of rotation से. Okay, it's easier for the same mass, it's easier to rotate a disk compared to a ring, even though they have the same mass. That's what the moment of inertia is telling you. Okay.
फिर बड़ा शोर हो रहा है। हाँ, dr was this thickness of this ring. रिंग के आप थिकनेस 0 तो नहीं ला दे सकते, अदरवाइज तो आपके वो डिस्क कभी बनेगी ही नहीं। यू नीड टू मेक इट इन्फिनिटेसिमली स्मॉल। ओके, अच्छा जी, सो अनदर एग्जांपल, सिलेंडर। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, आपको सिलेंडर सपोज को यूं करके घूम रहा है। व्हाट्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिलेंडर अबाउट दिस एक्सिस? हाउ डू आई डू दैट? नहीं, विद इन सिलेबस फॉर श्योर। ओके, एग्जैक्टली, डिस्क का निकाल लिया तो डिस्क को स्टैक कर दो। लिटरली देखो, एक 3 डायमेंशन इंटीग्रल आप कर रहे हो विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। ओके, yeah, but you don't need to do that, right? You can do step by step. Okay, so ये एक डिस्क जो है उसको कंसीडर कर लो। इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसका होगा डी, इस छोटी सी डिस्क का, पतली सी डिस्क का क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा? The moment of inertia, this will be a small contribution to the total moment of inertia. That's why I'm writing di. इसका क्या होगा? dm times बस बाई 2 भी तो होगा ना। एक डिस्क का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² होता है ना। dm is the mass of this disk. r² is of course the radius of this disk, which is also equal to the radius of the cylinder. Okay, so this is then the total moment of inertia क्या होगा? Half dm r², and you have to add up over all limits of integration। देखिए मेरी, this is essentially how, you know, advanced mathematics में आप लिमिट स्पेसिफाई करते हो। आप नंबर्स लिखने की बजाय बस लिख देते हो बिकॉज ये लेजी हो गया। ओके, एंड इन दिस केस इट्स यूजफुल, क्योंकि क्या हाफ आपका इंटीग्रल से बाहर चला जाएगा, r² भी आपका इंटीग्रल से बाहर चला जाएगा, बिकॉज दीज टू थिंग्स आर द सेम फॉर एवरी डिस्क दैट यू आर कंसीडरिंग। और बाकी क्या रह जाएगा? व्हाट्स द इंटीग्रल ओवर द dm? दिस इज द सम ऑफ द masses of the disk which gives you the mass of the cylinder। तो ये आ जाएगा हाफ mr², where now m is the mass of the cylinder now। तो डिस्क की मोटाई जो है उसके इंडिपेंडेंट है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिस्क पतली सी है या मोटी सी है या पूरा बड़ा सारा सिलेंडर है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टिल हाफ टाइम्स द mass टाइम्स रेडियस स्क्वायर। ऑफ कोर्स प्रोबेबली अगर सेम मटेरियल का बना हुआ है, ऑफ कोर्स द mass of the cylinder will then be bigger than the mass of the disk। सो ये मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल सेम आ जाएगा, नंबर सेम आएगा, but the formula looks the same। okay, अगर किसी स्टील की आपने पतली सी डिस्क कंसीडर की है एक रेडियस की, और फिर आपने एक सिलेंडर पकड़ लिया है उसी स्टील का ऑफ द सेम रेडियस, सिलेंडर का ऑफ कोर्स मास ज्यादा होगा एंड देयरफॉर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। ओके, तो इससे ना कंफ्यूज हो जाएगा सर हाफ mr² आ रहा है दोनों केसेस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम होगा। वेल दैट इज द सेम इफ द masses आर द सेम। डिस्क से एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² निकाला था ना, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्या होगा? हाफ टाइम्स द मास ऑफ दिस डिस्क टाइम्स द रेडियस स्क्वायर। ओके, राइट, अनदर एग्जांपल। इनमें से मैंने कोई भी एग्जाम नहीं आपको देना, इसलिए बेताशा करा रहा हूं आपको। ओके, बट एनीवे, ओके, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, क्योंकि बहुत जल्द हमने एंगुलर मोमेंटम वगैरह और उस कॉन्टेक्स्ट में ढेर सारी इंटीग्रेशंस करनी है, एंड दिस इज द सिंपलेस्ट कॉन्टेक्स्ट इन विच यू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर देयर। उधर क्योंकि आप एंगुलर मोमेंटम वगैरह के भी बारे में सोच रहे होते हो, सो इधर कम से कम आप मैथमेटिकल पार्ट थोड़ा सा क्लियर अप कर लो ऑलरेडी। ओके, सो यू हैव अ स्टिक फॉर एग्जांपल, यू हैव अ रॉड, लेट्स जस्ट टेक अ रॉड। ओके, और रॉड को जो है मैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द घुमाता हूं। सो द रॉड इज ऑफ लेंथ l, और इसकी रेडियस है जी कैपिटल R, और इसकी लेंथ है जी कैपिटल L। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? हाफ mr²। अगर ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सच के ये यूं घूमती है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सो ये चौक फॉर एग्जांपल बजाय यूं घूमने के यूं घूम रहा है। लेट्स डिराइव इट। ओके, तो आप मोमेंट आपने इस एक्सिस के करना है, सो सेट योर ओरिजिन ओवर हियर
और अब आपने करना है कि भाई ये पूरा का पूरा जो है दिस इज, ये इस तरह चॉप अप करो कि ये इस पीस को देखो, ये पीस यूं करके मूव कर रहा है ना, the distance of this piece from the axis of rotation is ये distance, and this is the x axis, is the y axis, so let's just call this that ये x coordinate है इस पीस का, okay? और इसका mass इस पीस का क्या है, हम कह देते हैं dm है, so moment of inertia क्या आएगा, sum over I MR² which in this context will be equal to, अगर मैं लिमिट ले लूंगा, पीसेस बड़े छोटे छोटे हैं तो इंटीग्रल बन जाएगा, फिर क्या आएगा, हर पीस का मैस बहुत छोटा है तो dm आ जाएगा, ये क्या चीज आ जाएगी जो कि इस केस में है L/2, तो इसका है यार डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस है, इसका तो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस क्या है इस पीस का, x², okay? This is very similar to what you did for center of mass, okay? This is the moment of inertia for this rod. या वो center of mass जो था वो छोटा कजन था, जो इंटीग्रल ऑफ x dm था, ये उसका थोड़ा सा बड़ा कजन है क्योंकि x² dm आ गया. हाँ. Oh, over there, ये क्योंकि डिस्क का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हाफ टाइम्स द मास ऑफ द डिस्क टाइम्स द रेडियस स्क्वायर्ड ऑफ द डिस्क. यहां पे क्यों नहीं है, क्योंकि इधर मैं रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस्तेमाल कर रहा था. रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द मास ऑफ द रिंग टाइम्स द रेडियस स्क्वायर्ड ऑफ द रिंग. ओके, सो दिस, नाउ फर्स्ट आई हैव टू राइट डाउन dm क्या होगा इन टर्म्स ऑफ dx. For a uniform rod, it will be m/l times dx, और इसको इधर लिख दो x² m/l times dx, and this goes from नहीं minus L/2 to plus L/2. There's one of you is very good at figuring out the limits of integration, okay? वो है, okay, anyway, so ये इधर रखा ना ओरिजिन, जिधर जिस एक्सिस के इधर रोटेट कर रहा है उधर ही आपने ओरिजिन रखा है. द लेफ्ट एंड ऑफ द रॉड इज एट minus L/2, द राइट एंड इज एट plus L/2. आपने रॉड के ऊपर सम कर देना ना, नहीं वो उधर नहीं रख सकते, आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन भी रखना है इधर. ओके, द होल फॉर्मुलिज्म रिलाइज ऑन दैट. टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा हमने डिराइव ही उस केस के लिए किया है जहां आपने ओरिजिन उधर ही रखा हुआ है जिस एक्सिस के रोटेट कर रहा है. अदरवाइज टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा इज नॉट एप्लीकेबल. ओके, सो यू देन हैव के m/l और फिर x² को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, नाउ इज योर टाइम टू शाइन, डोंट लेट रेड स्पॉट डाउन. ओके, s³/3 और फिर minus L/2 और L/2 डालोगे 1/3 तो बाहर फेर है, x³ L/2 डालोगे तो L³/8 आ जाएगा, minus L³/8 you'll get L³/4, so you'll get m/l 1/3 L³/4, and this will give you 1/12 ml². If ये चौक इस तरह रोटेट कर रहा होता यूं करके, आप इमेजिन करो यूं करके चौक को रोटेट करना ज्यादा आसान है या यूं करके रोटेट करना ज्यादा आसान है, बीच वाले से. वो आप इधर से देख सकते हो, बड़े आराम से देखो, तेजी से घुमाई जा रहा हूं, मुझे काफी मुश्किल से निस्बतन घूम रहा है. ओके, and why is that true? How do I show that quantitatively, that it's much easier to rotate a rod like that compared to this? How do I show that? Exactly, calculate the moment of inertia for the second case, कि इस एक्सिस के गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, उसमें एग्जैक्टली सेम डेरिवेशन चलेगी, सिर्फ लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या बन जाएंगी आपकी, 0 से लेके L तक. 0 से L तक अगर आप इंटीग्रेट करोगे, m/l बाहर गया, x³/3 आ गया, ये L³/3 आ जाएगा, which will be 1/3 ml². So the moment of inertia for this case जहां एंड पे रोटेट कर रहा है is 4 times bigger than the moment of inertia for the case where it's rotating like that. आपको 4 times ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा to achieve the same angular acceleration. Okay, and you can obviously see now hopefully कि rod वही rod of exactly the same length, but the moment of inertia is different because the moment of inertia also considers कि आपकी axis of rotation किधर है. It's not an intrinsic property of an object. एक डब्बा है, once I specify उस डब्बे का mass 2 kg है, that's it.
डब्बा जो मर्जी कर रहा है, डांस कर रहा है एलिवेटर में, आपके सर के ऊपर गिर रहा है, नेवर माइंड, द mass of that is always 2 kg, but the moment of inertia is different. That depends on कि डब्बा रोटेट कैसे कर रहा है, किस एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है. Okay, so the moment of knowing the moment of inertia is of crucial importance. Okay, before we get started on that, let me do another problem जिसमें translation भी है और rotation भी है, but not as complicated as I will do in the next lecture. जो चीज़ कुछ चीज़ें ट्रांसलेट कर रहे होंगे, कुछ चीज़ें रोटेट कर रहे होंगे, जो चीज़ें रोटेट कर रहे होंगे वो सिर्फ रोटेट कर रहे होंगे, जो चीज़ें ट्रांसलेट कर रहे होंगे वो सिर्फ ट्रांसलेट कर रहे होंगे. That makes it sound more complicated than what it is. I of course have in mind pulleys. So this pulley is fixed in place, it can only rotate, these masses can only translate, they can only move up or down. Okay. So this is a pulley of mass m. This pulley has radius capital R, this has mass m1, this has mass m2. And now your task is to do what? नहीं, इस किस्म की प्रॉब्लम देख चुके थे, पहले क्या निकालते थे इस किस्म की प्रॉब्लम में? You found out the acceleration of the two masses, A1 और A2 निकालते थे, याद आया? अभी भी आपने A1 A2 निकालना है, but now you have to take into account the mass of the pulley. The pulley is no longer massless. Okay, that's the only change. तो पहली चीज क्या करोगे? Thank you. Okay. क्या फोर्सेस लगेंगी? कोई इज्जत रख लेना, मेरा थोड़ा सा मान रख लेना. Yes, weight hopefully as you well know m1g नीचे की तरफ होगा hopefully. And T1 is actually going to act T1 ऊपर, okay, right? I mean ये M1G तो ऐसी फोर्स है जो हर वक्त बना के बैठा होता है. Once just as a trick question मैंने कोई डीप स्पेस में प्रॉब्लम दे दिया था, ये वाला ने कोई और दिया था, उधर भी हर किसी ने mg नीचे बनाया हुआ था. वो कहा ये क्या ऐसा, सर जी की वैल्यू 0 है ऐसा है ना. यार technically that's fine, but you shouldn't just have drawn it in the first place. Okay. Okay, anyway, so you have that. Okay, so the second mass m2g, and then you have T2. This is exactly the same as what you have already done. You don't need to worry about the rotations of m1 and m2. They are effectively just point particles. This is different from a yo-yo problem. तो फॉर एग्जाम्पल यो-यो के अंदर एक सिलेंडर के थ्रेड रैप होगा और एक और सिलेंडर नीचे जो है वो अनरैप करता हुआ स्ट्रिंग नीचे जा रहा होगा. That's something we'll do later. Okay. Over here these are still very small cubes effectively. So you write down, you choose your axis, so you say that axis, that is the direction of my y-axis, so you write down T1 minus m1g is equal to m1a1 and T2 minus m2g equals m2a2. Until now everything is the same. इसके बाद क्या करेंगे? I'll still assume that the strings are massless and I'll still assume that the string is inextensible. So if the string is inextensible, I'll say कि जितना m2 ऊपर जाता है उतना m1 नीचे जाता है. So then I say that okay, let me say a2 is equal to a and then a1 is equal to minus a. So I just say that okay, ये मैं मिटा देता हूँ and then I write this as minus m1a. Now I have three unknowns, T1, T2 and A, and I have two equations. So I need another equation. That of course used to come about by looking at the forces. So if you draw the free body diagram of this portion of the string, you say that okay, for this portion of the string you have T1 acting downwards, but then this string is massless, so there must be T1 acting upwards. And then you draw the free body diagram of the pulley plus the upper half of the string. That is the system that you consider. इस सिस्टम के ऊपर क्या फोर्सेस लग रही हैं? T1 नीचे की तरफ लग रही है, okay? और similarly on the right hand side you will have T2 acting over here and therefore T2 upwards over here, and then T2 will be acting downwards over here.
Of course, there's another force, that the nail that is attached to the pulley, that is going to apply. And now, of course, you can say that N is equal to T1 plus T2. Why? Right? Oh, yeah, okay, thank you. N is equal to T1 plus T2 plus mg. You can say that, but right? We have what? Because why can you say that N is equal to T1 plus T2 plus mg? Because it's not accelerating vertically. So the net vertical force has to be 0 on this pulley. Okay, the center of mass of the pulley is not moving anywhere. So the net external force on this pulley has to be 0. Okay. Therefore, however, the pulley is still going to rotate. And now it's not going to rotate infinitely fast, of course. It wasn't rotating infinitely fast before either, which is why you concluded that T1 equals T2. T1 is causing a anti-clockwise rotation. So the torque produced by T1 is out of the board or into the board? निकालो यार, R cross F. इस R को पहले उधर slide करो. Out. So you got T1 times R minus T2 times R. This is out of the board, this is into the board. T2 का torque is into the board. Again, just to demonstrate that, इस R को यूं करो. Okay, dramatic illustration of the right hand rule. Okay, anyway, okay. Hopefully ये तो करना आ गया है. अच्छा, T1 R minus T2 R should be equal to, this is the net torque acting on the pulley. Why isn't mg leading to a torque? Because it's passing through the point about which you are calculating the torque. Pulley अपने middle से rotate कर रही है. So the line of action of this force is passing through point, and therefore, the illustrious authors at red spot have concluded that the torque must be 0 for this force. Okay, so you have then that T1 R minus T2 R equals, nahi, I alpha. The net torque on the pulley equals the moment of inertia of the pulley about this axis times the angular acceleration of the pulley. Or modeling the pulley as a disk. And for a disk, we know that the moment of inertia is half mr², so I can just write half mr² times alpha, where capital M, of course, is the mass of the pulley and capital R is the radius of the pulley, right? And then from here, I can divide both sides by capital R. Surely the radius of the pulley is not 0, so I am safe in doing that. So you have that and that, okay? And so this is my third equation. I had two equations before and I had three unknowns before, T1, T2 and A, and now I have a third equation. The only issue is that R to pehle hi hai. You assume that you know the mass of the pulley, you assume that you know the radius of the pulley, so you know the property. You don't know alpha. So, asman se gira khajur mein atka. You had one more equation, but now you have also introduced one more unknown. So that's not really that useful, okay, to begin with, okay. Now you have three equations, those two and this equation, but now you have four unknowns, T1, T2, A and alpha. Now before going on, let me just highlight one point. Right? Agar pulley hai, suppose karo, ye disk hai. You look at the point on the edge of the disk. And I say that this pulley is rotating with some angular velocity omega. This can be changing, but at this instant of time, the angular velocity of this disk, when it is rotating about this axis, is omega. I ask you, what's the relationship between the tangential velocity of the disk of a point on the edge of the disk and omega? So आप कहोगे, well, एक छोटा सा time interval देखते हैं delta t. डेल्टा टी के दौरान जो है ये एंगल जो इसने स्वीप आउट किया है वो होगा डेल्टा थीटा. डेल्टा थीटा ऑफ कोर्स इज ओमेगा टाइम्स डेल्टा टी. दैट्स द डेफिनेशन ऑफ ओमेगा. Okay, छोटा सा टाइम इंटरवल, so this is fine. The distance that this point has moved, delta s, this arc length delta s, ये किसके बराबर होगा? Is the radius of this thing times delta theta, which is r omega times delta t. Which I can also write as tangential speed multiplied by delta t.
टेंजेंशियल स्पीड मल्टीप्लाई डेल्टा टी करूंगा तो पता चलेगा ना पॉइंट कितना मूव किया. सो दिस इज इक्वल टू द टेंजेंशियल स्पीड टाइम्स डेल्टा टी एंड देयरफॉर v इज इक्वल टू r ओमेगा. This is the tangential speed. This is your good old v is equal to r omega. But you need to understand ये किस चीज की बात हो रही है. This is the tangential speed of a point on the edge of the disk at a particular time equals the radius of the disk times the angular velocity of the disk. Okay. You can differentiate this with respect to time and you get that the tangential acceleration, not the radial acceleration, the tangential acceleration of a point on the edge of the disk equals the radius of the disk times the angular acceleration of the disk. That's another way to understand that if for uniform circular motion alpha क्या होगा? Uniform circular motion के लिए ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा जीरो होगा ना, तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या होगी? जीरो. इसलिए तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यू ओनली वरी अबाउट द रेडियल एक्सेलरेशन. याद आया v square over r. इधर v square over r नहीं है because I am worried about the tangential acceleration over here. Okay. Okay, now coming back to this. Okay. इसमें now I can draw a conclusion between alpha and a. आपको के सर निकाल तो लिया. अल्फा अभी तो आपने डिराइव किया a is equal to r alpha. तो आपका अल्फा तो होगा a over r. बल्ले बल्ले. Except that there is an issue. ये तो आपने बताते हैं. So why can't I just substitute for alpha a over r? अभी तो डिराइव किया. A different है. A over there is the tangential acceleration of a point on the edge of the disk. इधर तो A acceleration आपके ब्लॉक 2 की. याद आया? I mean that's the जिसको क्या कहते हैं? Overloading your symbols in program. Okay, so anyway. Exactly. तो फिर substitute कर सकते हो. Okay. So I just want to point out that you have to be very careful about कि आपका A से मतलब क्या है. Whenever you do this substitution, इधर ढेर सारी accelerations है. There's a radial acceleration, there's a tangential acceleration, there's the acceleration of the blocks. Okay, इधर आपकी जो A इस्तेमाल किया that is for the acceleration of the block 2. But if you now assume that the rope ये rope जो है जिस तरह घूमती है rope भी उसके साथ साथ चलती है. If you make that assumption that the rope does not slip over the pulley, जितना rope घूमती है उतना string move करती है. Then अगर जितना string move करती है उतना ही rope घूमती है, फिर जितना block ने कितना move किया होगा, block ने भी उतना ही move किया होगा जितना rope ने move किया, because the string is inextensible. So then you can say जितना pulley घूमी है उतना ही block ने move किया. या essentially जितना ये पुली के एज पे जो पॉइंट मूव किया है उतना ही ब्लॉक आपका ऊपर आया है. ओके, इफ द रोप डजंट स्लिप ऑन द पुली. ओके, सो इमेजिन करो कि ये पुली स्टक इन प्लेस है और रोप जो है स्लिप कर जाते, क्या होता है? पुली घूमती नहीं है और रोप जो है वो मूव कर रही है, ब्लॉक गिर रहा है. दैट इज द ऑपोजिट एक्सट्रीम सिनेरियो. यूजुअली इन दीज सिनेरियोज वो पुली रोप जो है आपकी साथ साथ मूव कर रही होती है पुली के. Then the acceleration of the block equals the tangential acceleration of a point on the edge of the pulley. And therefore you can write down now A is equal to R alpha. But you have to make sure that you understand कि अब A जो है that is the acceleration of the block, not the acceleration of a point on the edge of the pulley over here. They are equal of course, but now you can make this substitution. Okay, जितना आपका ब्लॉक ऊपर मूव किया है उतना ही पुली घूमी है. And therefore you can make this connection. Okay, now before doing this you have to be careful about the sign. इधर सवाल है कोई? Okay, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन ये A थी. अगर रोप स्लिप नहीं कर रही, जो भी पुली की टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगी वही एक्सेलेरेशन होगी ब्लॉक की, क्योंकि अदरवाइज पुली कोई कुछ डिस्टेंस मूव करेगी, ब्लॉक कोई और डिस्टेंस मूव करेगा. सो द पुली वुड स्लिप, द रोप वुड स्लिप ओवर द पुली. अच्छा, ये अब आपकी आ गई, ठीक है.
अब बिफोर यू प्रोसीड ब्लाइंडली प्लगिंग इट इन, आपको पता है, आपको बड़े जोश से आप यू गो ऑन फोर्थ, ओके, चेक द साइंस. अगर आपकी इधर आर तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव है, क्यों? आर इज द रेडियस, अगर अल्फा पॉजिटिव है, what this equation is saying कि अगर अल्फा पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है. That means the way that I have written down everything, अगर पुली एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो M2 को क्या करना चाहिए? ऊपर जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए? The way I have written down all these equations. A अगर अल्फा पॉजिटिव है तो A भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है the way I have written down all the equations is कि अगर पुली एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो M2 आपका ऊपर की तरफ जाना चाहिए. You need to make sure that this is indeed what's taking place. अगर आपका M2 ऊपर जा रहा है और M1 फिर नीचे जा रहा है, पुली कैसे घूमेगी? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज. So now the signs are fine. अगर on the other hand, आप जल्दीबाजी में करते कि A1 को मैं A सेट करता हूँ और A2 को माइनस A सेट करता हूँ, which is perfectly fine. ये अगर करते, लेकिन फिर आपको इधर जाके माइनस R अल्फा लिखना पड़ता. Because then when the pulley is rotating anti-clockwise, आपका M1 जो है वो बजाय नीचे जाने के वो ऊपर जा रहा होता है. So you fix that with a sign over there. Okay, ये बेसिकली रिलेशनशिप है मैग्नीट्यूड्स के दरमियान कि जितना वो ऊपर जा रहे हैं उतना ही घूम रहा है. Okay, but then you have to take the directions into account. Okay, so you have that. इधर A over R कर लो और फिर क्या आएगा? हाफ MA. नहीं, अब बाकी काम आपने करना है. इस इक्वेशन को लेना है और इन दो इक्वेशंस को लेके आपने सिमल्टेनियसली सॉल्व करना है. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, 3 लीनियर इक्वेशन, सॉल्व देम सिमल्टेनियसली. यू गेट T1, T2 एंड A. ऐसे जो है A का ऑफ कोर्स एक्सप्रेशन अब छोटा होगा कंपेयर टू द प्रीवियस एक्सप्रेशन. क्यों? क्योंकि नाउ द मास ऑफ द पुली इज आल्सो काइंड ऑफ contributing to the inertia. अच्छा जी. Okay, so in these rotational problems, the moment of inertia is of crucial importance. और आपके फॉर्मूला शीट के पेज 2 पे मिड टर्म में तो आपको पहला ही पेज दिया था, दूसरा पेज इज ऑल अबाउट मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया. रॉड का आपका ये वाला भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया होगा, मिडल वाला भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया होगा, एंड वाला भी दिया होगा. बट सपोज आई गिव यू समथिंग लाइक दिस, एक डिस्क है, मैं कहता हूं इस डिस्क का अबाउट दिस एक्सिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज हाफ MR². व्हाट्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट दिस एक्सिस? और ये मैं कह देता हूं R/2 है. उतना क्लियर नहीं है. और ये आप कहोगे सर ये तो फॉर्मूला शीट में आपने दी गई, ये मैंने डिराइव करना है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिराइव दिस टू बिगिन विद. आप कहोगे सर इस एक्सिस के तो कोई खास सिमेट्री भी नहीं है. डिफरेंट पॉइंट्स विद इन दिस डिस्क आर एट वियर्ड डिस्टेंसेस अवे फ्रॉम दिस एक्सिस. ये वाला पॉइंट इतनी दूर है, ये वाला पॉइंट बिल्कुल करीब है. ओके, हाउ आई एम सपोज टू सेट अप द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन? ये तो मैं स्टैक ऑफ रिंग्स भी नहीं बना सकता इधर, क्योंकि सिमेट्री नहीं है एसेंशियली. हाउ डू आई डू दिस? You essentially, there's something called the parallel axis theorem, okay, which says the following. So listen closely. एक पॉइंट है O, एक एक्सिस उसकी गिर जा रही है, उसके थ्रू जा रही है पॉइंट O से. There's another axis that is passing through the center of mass. That's crucial. One of the axes needs to be passing through the center of mass, otherwise this thing does not apply. So there's one axis that is passing through the center of mass. उसके गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है. जनरली जो भी आपको फॉर्मूला शीट या जो भी टेबल्स वगैरह में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिस्टेड होते हैं, those are for axis passing through the center of mass. It's understood कि parallel axis थ्योरम लगा के आप कोई भी और एक्सिस के गिर्द निकाल सकते हो बड़े आराम से. Okay, so you know the moment of inertia for this axis. Your objective is to find out the moment of inertia about this axis. यानी कि असल में कील आपने इधर ठोका हुआ है और फिर आप इसको घुमा रहे हो about this
thing. Okay. So what you need to find out is I/O. The parallel axis theorem says that बस करो भाई बातें. The parallel axis theorem says that I/O equals ICM, the moment of inertia about this axis, ICM plus the total mass of the object that you're dealing with times कोई distance squared. Distance squared क्यों जरूरी है? नहीं बस है नहीं क्योंकि इसकी dimensions mass times distance squared है. So this equation will only make sense if this second term also has dimensions of mass times distance squared. और distance जो आएगा इधर is the distance between the two axes, जिसको D कहते हैं लोग. That's the parallel axis theorem. ये derive करते हैं, relax करो, पहले theorem समझ तो लो. I mean, Pythagoras theorem का proof जो है बाद में करते हो, पहले Pythagoras theorem को देखते तो हो. So you have essentially over here that the moment of inertia about this axis equals बस कर दो भाई, क्यों इतनी बातें किए जा रहे हो आज? Okay, पता नहीं क्यों इतनी कोई total mass of the object. And the moment of inertia about the center of mass plus the total mass times d square. D is the perpendicular distance between the two axes. The two axes need to be parallel, hence the name parallel axis theorem. Okay, right? Let's see where this comes from. The proof in itself is not that important. There's one step in the proof which is very important, because that single step is something that you see over and over and over again in the next lecture. Okay, and this is the simplest scenario in which to understand that step. Okay, so let's go quickly through this proof. Okay, the proof is 4 or 5 lines. Okay, so don't worry. So कोई general object आपका ये आलू ले लो. The moment of inertia about this axis, you have to find out. You presumably know the moment of inertia about this axis. This is your center of mass. Okay, so this is your center of mass. ये moment of inertia about this axis निकालोगे कैसे? This is a flat, thin, pancake shaped object. इसको छोटे छोटे pieces में divide करोगे ना, ये piece को for example consider कर लो. और ये आप करोगे कि भाई ये वाला वेक्टर जो है this is Ri, and the moment of inertia about O will be equal to sum over I mi Ri square for all the pieces. This I can also write as I mi Ri square. I've just written down in terms of vectors. Ri क्या है? Ri square क्या है? Ri square is the magnitude of this vector squared. और मैंने कुछ भी नहीं किया. Okay. But now I can relate this Ri vector to the position of this piece relative to the center of mass. ये देखो ये मेरा capital R है. As in with respect to this origin, the location of the center of mass is as usual capital R. And the position of this piece relative to the center of mass is Ri prime. जिन्होंने कोई extra problems खोल के देखे हैं, जिन्होंने planning की थी कि पहले physics के quiz की तैयारी कर लेते हैं, फिर chemistry की तैयारी करेंगे, अगर उन्होंने extra problems किए हैं, हुआ मैं kidding कि नहीं किया, आज रात करने हैं आपने. So you might have seen something very similar in the problem involving collisions. But anyway, Ri prime. Ri prime is the position vector of this piece relative to this. क्या चीज? हाँ वो इधर लिखा है वेक्टर में, ऊपर नहीं लिखा. या वो इस अंडरस्टूड का आप स्केयर डाल दिया तो वो वर्टिकल बार्स के साथ ही है. As in this vector scared stands for this thing. And ये तो notation की बात है ना. Okay. This is also equal to A dot A. याद आया? A vector squared equals the magnitude squared of the vector equals the vector dot product with itself. Okay, right? And now I can write down that Ri equals, इन तीनों vectors के साथ relationship क्या है? Ri prime plus capital R. So I substitute this thing over here and I have that Ri squared, which I can also write as Ri dot Ri.
and therefore I can write this thing as Ri prime plus capital R dot with Ri prime plus capital R. And now I use the property of the dot product to expand this. So then what do you get? So you get Mi Ri prime squared so you get I naught is equal to I. You basically, when you expand this, you'll get 4 terms. Ri prime dot Ri prime dot capital R dot Ri prime R dot R. So you get Mi Ri prime squared plus sum over I Mi. ये बार बार देखोगे अगले लेक्चर में. एंगुलर मोमेंटम की भी इसी तरह मैं स्प्लिट अप कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी को भी इसी तरह स्प्लिट अप कर रहा हूँ, तो देख लो एक दफा. ओके नहीं, एक दफा नहीं देखना, बार बार देखोगे. ओके so you have Mi Ri prime okay plus you have of course Mi capital R dot Ri prime, but capital R dot Ri prime is the same thing as Ri prime dot capital R, so I can just, is the same thing, so I can just put a 2 over here, as in the middle 2 terms basically add together, and you finally have Mi and you have R squared. अच्छा जी, ये बताओ भाई पहली चीज क्या है? In terms of the symbols I've already written down. Is ICM. Either Ri prime squared क्या है? This is the distance of each piece from the center of mass, from the axis of rotation that is passing through the center of mass. तो ये तो ICM है. और ये क्या है? M times D squared. कैपिटल R का मैग्नीट्यूड क्या है? That's just the distance between the two axes. क्योंकि ओरिजिन मैंने किधर रखा था? I placed the origin at one of the axes. तो कैपिटल R का मैग्नीट्यूड क्या होगा? That's just the distance between the two axes. अब hopefully the moment the parallel axis theorem is in front of us, if this thing goes away, which of course अगर आपने करना तो आप कहोगे this is equal to 0. I don't know why, but it should be equal to 0. Otherwise the parallel axis theorem won't be true. Why is this 0? That's the step that I was saying कि ये आपने समझना है गौर से कि क्यों 0, कि बार बार आप देखोगे ये 0 है. नहीं, ये देखो, इधर सपोज करो मैं ये वाला पीस कंसीडर करूं, इसका Ri प्राइम तो ये है, इसका कैपिटल R ये है, ये किधर से परपेंडिकुलर आपको नजर आ रही है? नहीं, मतलब it depends on the piece that you're considering, right? The reason why this is 0 is that this sum is 0. आप परपेंडिकुलर कह रहे थे, मैं डायरेक्शन की तो बात ही नहीं की, मैं इस वेक्टर सम की बात कर रहा हूं. ओके, और क्यों ये 0 है? नहीं, यू आर लुकिंग एट द पोजीशन. अगर आपको थोड़ी बहुत स्टैटिस्टिक्स आती है, ये ऑब्वियस है कि क्यों 0 होगा. यू आर लुकिंग एसेंशियली एट द एवरेज अराउंड द एवरेज. ये एवरेज है अराउंड द एवरेज, क्योंकि आप Ri प्राइम ले रहे हो, बस द एवरेज अराउंड द एवरेज 0 ही होगा, क्योंकि एवरेज पॉइंट इज इन द मिडल. Okay, but anyway, let me show you कि क्यों 0 है. कैपिटल R क्या है? By definition, this is Mi Ri divided by capital M. इधर Ri क्या है? Ri is the position vector of each particle relative to some coordinate system. You apply this recipe on the right hand side, you get capital R, the center of mass, in the same coordinate system. जिस coordinate system में आपने ये vectors लिखे हैं, उसी coordinate system में आपको ये vector मिलेगा. So I can apply this recipe in any coordinate system, of course. In particular, let me apply this to a coordinate system attached to the center of mass. जब मैं attached to the center of mass कहूँगा, इन vectors को क्या होगा? These will become, of course, Ri prime, right? So for the center of mass, according to coordinate system attached to the center of mass, मुझे आएगा capital R prime मिलेगा. This prime just shows that this is the center of mass according to the coordinate system attached to the center of mass, equals Mi Ri prime divided by capital M. लेकिन ये capital R prime है क्या? This is the center of mass according to a coordinate system attached to the center of mass. अगर मैं center of mass के ऊपर खड़ा हुआ मुझे किधर मिलेगा center of mass? मेरे पैरों के नीचे या अपने ऊपर? ओके, depends on ये.
कितनी मोहब्बत है आपको सेंटर ऑफ मास के साथ, ओके, बट एनीवे, ओके, पैरों के यूं देख लो नीचे तो यू विल सी द सेंटर ऑफ मास, एज इन द सेंटर ऑफ मास विल बी एट द ओरिजिन अकॉर्डिंग टू द सेंटर ऑफ मास. कैपिटल आर प्राइम क्या होगा? 0. सो इफ दिस थिंग इज 0, कैपिटल एम को उस साइड पे लेके जाओ, ये सम किसके बराबर आएगा? And therefore this sum is 0, and therefore this whole term is 0, and therefore you have the parallel axis theorem. So just remember that just illustrates my point. देखो पूरी डेरिवेशन 4-5 लाइंस की है टोटल, लेकिन बोलना मुझे बहुत पड़ा है, ओके, एज इन द ये मैथमेटिक्स 2 लाइन की है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है, ओके.